अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम यस मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम मैम। रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा ज़रा। जी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा क्लास की ज़रा काइंडली। क्यों बाकी लोग अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं क्या? और मैम बात काफियों की तो फ़ोन की बैटरी स्लो है, तेज कॉलर्स की तो। मैम अच्छा, लोग लैपटॉप्स वगैरह नहीं लाए हुए। ओके ओके क्लास. So last time we were discussing about the should we start now? Okay class, so we are going to start with general energy balance for open system. As in the last lecture we discussed that for a closed system for a closed system without reaction, and it was about two cases like steady state and unsteady state system. So here we also discussed some problem related to it. So here we are going to start with general energy balance for open systems. As you are familiar with general energy balance already, when we talk about any open system, what is an open system? Anybody can tell me? मैम मटेरियल कैन एंटर एंड लीव द सिस्टम। Both material and energy can enter and leave the system. So here an open system, it involves mass flow in the energy balance. What it means that there is, since we are dealing with energy balance, so here mass flow is also included in this system. So again we are going to discuss two cases like unsteady state system and then steady state system. So if mass flows in and out of the system, the mass carries energy along with it. So here is a simple diagram, simple case study like since in the plant we are not dealing with a single unit, like we are not dealing only with the air reactor or with an exchanger, but there are multiple units attached, or they are in series or in parallel, so we need to deal with all of them. So here some units, they are connected in series, like here there is a water reservoir. Water is flowing in out of this reservoir. Here it is inlet stream to a pump. Now in the from pump it is taken to the heat exchanger. Then this water is converted into steam, and then steam is taken to some storage tank. From there it is taken to the turbine where some work is produced, and then this water leaves the system. So this is the whole boundary of the system, where point 1 indicates the point at which water enters the system, and point 2 is the point, is the location where this water leaves our overall system. This boundary, this contains a pump, a heat exchanger, storage tank and turbine. Now whenever water is coming or water is entering into the system, this water at point 1, it will contain some mass which is represented as m1. It will have some potential energy PE1, kinetic energy and then internal energy. Now this is taken to the pump. Now from the pump, since pump does some work on the water to increase its pressure, then it is taken. So W electric is the work done to pump this water from point 1 to the inlet of heat exchanger. Then in the heat exchanger, as you know that it is a device to for the exchange of heat between two streams, like one is cold fluid and second one is a hot fluid. So water is being converted into the steam. Here water enters and then it leaves as steam. That means temperature of water is increased and its energy contents are increased. Now from where this water takes its energy? It takes from this stream. There is some stream enter into the system which has some energy, that is Q in. And when it leaves the system, its energy will be Q out, that is some minus energy. So whatever the energy water is taken and then some of the energy will be leaving the system, it will be considered here, and then it is taken to the storage tank where it is placed for some time, or if it is a continuous system, then it will directly go to the turbine. Since this is unsteady state system, so it stays here and then to the turbine from where some work is produced, like some generator is worked or some other component is run,
and then this water leaves the system at point 2. Now when it leaves the system, then its mass will be m2, potential energy will be p2, and then kinetic energy and then internal energy will be represented as u2. So whenever water is from point 1 to point 2, overall whatever the change will be in the energy of the system, that will be considered. Along with this, we need to determine, we also need to determine the mass balance along with this. So if the mass values are given to you, then you will know that what is the accumulation within the system. Like some of the, when water is being converted into the steam form, there will be, and then in the storage tank maybe some accumulation will be there. That will be considered in the, when we are doing some overall balance on the system. So here, this is a summary of the, some symbols which are used in general energy balance. You are familiar with these terms already. Here, as you know that accumulation term inside the system, as we discussed in the last lecture, that type of energy included here are internal energy, kinetic energy, and potential energy. Now at time t1, these are the contents of energy which of the fluid which is inside the system, that is accumulation inside the system at time t1, and mass is represented as mt1. At time t2, internal energy, kinetic energy, and potential energy, and then total mass of the system. So here energy accompanying mass transport, when the mass enters or leaves the system, the type of energy which is associated with this mass will be internal, kinetic, and potential, represented as U1, kinetic energy, potential energy, and mass, and then transport out for the water which leaves the system, and mass of the flow, that is also given to you. So here net heat exchange between the system and surroundings during the interval T1 to T2 is given as Q. Work terms, whatever the type of work is being done on the system or from the system, that is taken as the net work. So shaft work, mechanical work, or electrical work, they all are included in the term W. Now when water enters or leaves the system, there has to be some flow work which is done on the system. By the, when it enters into the system, surrounding does the work, that is given as M1, P1, V1, as you have, as you know already, the pressure volume work. Then flow work done by the system on surrounding is minus time M, P2, V2. So these are all the revision of all the terms which we are using here. So next is for an open unsteady state system. As we know already that for any balance, when while it is a mass balance or energy balance, we need to do in minus out plus generation minus consumption is equal to accumulation. So here, as we are dealing with without reaction cases, that means that generation and consumption term will be zero. So here, firstly, we will focus on accumulation in the system from time t1 to t2. Delta E is equal to, since here mass is also related here, so mt2, this will also be included here, internal energy of the mass which is present inside the system, kinetic energy, potential energy at time t2, फाइनल टाइम पर माइनस इनिशियल टाइम के ऊपर जो है, ये जो टर्म है, दिस इज फॉर एक्यूमुलेशन टर्म. एक्यूमुलेशन किस मटेरियल की है? जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मौजूद था, कि अगर बाहर से भी मटेरियल एंटर हो रहा है, पहले से कुछ मैस अंदर मौजूद है, जैसे अगर वहाँ पर कोई पानी मौजूद है, स्ट्रीम मौजूद है, और वो 1 kg इसका प्रेजेंट था at 30 डिग्री सेल्सियस, इट विल हैव सर्टेन एनर्जी कंटेंट्स. और जब सिस्टम चल रहा है, बाहर से मजीद पानी ऐड होकर एक्यूमुलेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई है, मैस इसकी 2 kg पे चली गई है. इसका मतलब है कि m की वैल्यू और T2 और T1 विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि आपके पास मैस इसके अंदर एंटर हो रही है, सिंस दिस इज एन ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम में क्या था, M1 और M2 आपस में इक्वल थे, सो इट वाज टेकन एज कॉमन, लेके हम इसको स्मॉल m या हम इसको स्पेसिफिक की टर्म में ले जाते थे. लेकिन यहाँ पर आपके पास मैस की टर्म इंक्लूड हो जाएगी. सो इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पे क्या एक्यूमुलेशन है, माइनस इनिशियल क्या थी, और आपका डिफरेंस जो है वो चेंज इन एक्यूमुलेशन आपको बता देगा सिस्टम के अंदर कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है एनर्जी का. So energy transfer in with mass from T1 to T2, whatever the water is entering or the fluid is entering the system, these are its total energy contents. Then energy transfer out of the system क्या होगा, ये उसके energy contents है. Net energy transfer by heat transfer in and out. Heat transfer between system and surrounding in the term of
टेम्परेचर चेंज के साथ जो आएगा दैट इज टेकन एज Q, एंड देन नेट एनर्जी ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ वर्क जो होगा, whether the system is doing the work or work is done by the system, it is taken as a W term. And net energy transfer by work to introduce and remove mass from T1 to T2, P1 V1 M1 minus P2 V2 M2. So as a whole, we can write here that change in accumulation in the system is equal to फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए था, लेकिन वो ऑलरेडी उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले गए हैं. सो दिस इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल जो भी वैल्यू आ रही है प्लस Q प्लस W प्लस P1 V1 M1 माइनस P2 V2. So here this is the value for change in that is sorry accumulation term. ये वाली वैल्यू है, इसको इस ऊपर वाली इक्वेशन में प्लेस किया हुआ है. एंड देन फाइनली आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे इन द फॉर्म के जहाँ पर आपके पास इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क दे आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव द वैल्यू ऑफ enthalpy here. So it can be here taken as U plus PV is equal to H. So delta E will be equal to H2 plus final kinetic energy potential energy minus initial kinetic potential and enthalpy plus Q plus W. And final form for open system आपके पास delta E is equal to Q plus W minus or this is equal to delta H plus kinetic energy plus potential energy में change आ रहा है. Okay. So here this delta symbol this represents the initial minus final का जो भी symbol आ रहा है आपके पास time with respect to time, जबकि ये जो आपके पास delta आ रहा है change in kinetic and potential and enthalpy values this represents कि point 1 और point 2 तक पहुंचने में जितना system की energy में change आ रहा है उसको यहाँ पे represent किया जा रहा है. So these two delta symbols are different from each other. In case of delta E, delta means final minus initial in time and applies to inside the system. As I told you already, since this is an unsteady state system, that means कि कुछ ना कुछ mass accumulation वहाँ पर होगी. Accumulation का मतलब है कि अगर पहले से mass मौजूद थी, मजीद कुछ mass उसके अंदर add हो जाएगी और आपके पास system की energy के अंदर भी change होगा, या पहले से mass मौजूद थी और उसमें से कुछ mass बाहर निकल गई. तो accumulation की term वहाँ पर positive या negative में exist कर रही होगी. While in case of H plus PE plus kinetic energy, here this delta symbol indicates कि out of the system minus into the system जो आप here from inside from entering और leaving के दरमियान में जो होगा overall enthalpy kinetic energy and potential energy change जो आ रहा होगा वो आप वहाँ पे इंडिकेट करेंगे. और accumulation बताएगा कि विद इन सिस्टम आपके पास क्या चेंजेस आ रही हैं. So if there is more than, this was for a single component, but if there is a mixture of component, that is if there is more than one input and output stream for the system, then it will be convenient to find properties separately, and then you need to find the summation of input and output. So here delta E will be equal to final minus initial at time T2 minus T1 is equal to, you need to consider all the input streams, like if there are 2 or 3 components entering into the system, then you need to find out the enthalpy, kinetic energy and potential energy for all of the systems here. Okay, MI I represent कर रहा है कि आपके पास कोई भी number of components हो सकते हैं. M is total number of components. तो जितने भी systems इसके अंदर जितनी भी streams enter हो रही हैं आपने सबके लिए ये सारी values find out करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने इनको add कर लेना है. माइनस आपके पास आउटपुट स्ट्रीम्स जितनी भी आपने उनको भी ऐड करना है एंड प्लस Q प्लस W जो ओवरऑल सिस्टम का आ जाएगा. ठीक है, तो ये वैल्यूज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, बिफोर डूइंग सम प्रॉब्लम हम पहले इसमें देख लेते हैं एनर्जी बैलेंस फॉर ओपन स्टेडी स्टेट सिस्टम क्या होते हैं. सो as you know that the difference between a steady state and unsteady state system जब भी हम बात करेंगे there is a difference of accumulation. In an unsteady state system there is accumulation term involved, while in steady state system they are continuous system, open system, and there is no accumulation term involved. So all of the mass which is entering into the system is equal to all of the mass that leaves the system. And here the most processes in refining and chemical industries are open steady state system. Continuous processes are most effective in producing high volume products. Just like distillation is, it is also of two types, like continuous distillation and batch distillation. So batch distillation will be considered into in the
open unsteady state system, while continuous distillation is taken into this type. So here, whenever an open steady state system is involved, there delta E term will be 0, and there will be no accumulation within the system. So steady state means that all the properties and mass within the system are invariant with respect to time. Delta E is equal to 0. And finally, this equation will be Q plus W is equal to delta H plus potential energy plus kinetic energy overall system के लिए. And then जैसे last time भी हमने discuss किया था कि the values of kinetic and potential energy are mostly negligible as compared to other values. Or depending upon the type of system, we can assume that these values are 0. So these values can be ignored, and our final equation reduces to Q plus W is equal to delta H. Okay, so class, now we move to the problems related to these topics. So here, before moving, I will share the slides on Teams, so you can easily find out these problems and you will complete them by yourself, and then we will discuss it on Monday. But here, I would like to start with another problem that is about double interpolation. As you are familiar with interpolation, but if you in any problem you are given with double interpolation, then how you would do that? So here the problem is steam is cooled from 640 Fahrenheit and 92 psi to 480 Fahrenheit and 52 psi. What is delta H in BTU per pound? एक मिनट class. Okay, class. So if you look at your steam tables, please open your steam tables. Here in the, as I told you that there are SI system and AI American engineering system involved here. So in the American engineering units, आप देखेंगे properties of superheated steam in AI system में आप देखें जरा. इसमें on the left side there is a column for absolute pressure. So our first जो हमारे पास initial conditions है, that is 640 Fahrenheit and 92 psi. अब 92 psi जो है, it lies between 90 and 95 psi. So directly you cannot find the value for 92. Okay, and then if you look at the temperature chart on the right side, 480 degree Fahrenheit, it lies between 450 and 500 degree F. Okay. सो 92 के लिए भी आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा और 480 के लिए भी आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा. ठीक है, आपने इसमें क्या करना है? फर्स्टली आप ये कर सकते हैं, यू टेक द वैल्यूज ऑफ 90 psi एंड 95 psi. प्रेशर को आप यहाँ से वैल्यूज लें लेफ्ट साइड से, एंड देन यू नीड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एट 92 psi. ठीक है, या आप ये कर सकते हैं कि 90 psi के ऊपर आप क्या करें, 450 और 500 के दरमियान में 480 को इंटरपोलेट करें. ठीक है, 90 psi के ऊपर आप अपना टेबल थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहेंगे, यानी कंप्लीट करेंगे. यू टेक द वैल्यू एट 450, यू टेक द वैल्यू एट 500. ठीक है, तो आप इसको इंटरपोलेट करेंगे 480 के लिए. इसी तरह से अगली इंटरपोलेशन आप स्टार्ट करोगे 95 के ऊपर. 95 के ऊपर फिर आप 450 और 500 के दरमियान में आप इंटरपोलेट करोगे 480 के लिए. दो इंटरपोलेशन ये बनेगी, एंड देन फाइनली यू मूव टू दी 92 psi. फिर आप 92 के लिए करोगे इसको 480 के ऊपर. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली आपकी 3 इंटरपोलेशन होगी. आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको कंप्लीट कीजिएगा. ठीक है, 3 इस पर इंटरपोलेशन होंगी, और फिर हम इसको मंडे को डिस्कस करेंगे. आप मुझे दिखाइएगा, चेक करवा दीजिएगा. ठीक है, ओके. इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, दैट इज 3.42. पहले मैं नीचे वाला जो है वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम ऊपर वाले प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं. ओके, सो क्लास, हियर द प्रॉब्लम इज 1 pound of steam at 130 psi and 600 Fahrenheit is expanded isothermally
टू 75 psi इन ए क्लोज सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम का एक प्रॉब्लम था, इसको थोड़ा सा इसमें देख के तो फिर मैं आपको ओपन सिस्टम वाले का दिखाती हूँ। ओके, सो फर्स्ट स्टेट जो आपके पास स्टेट ए है दैट इज एट 130 psi एंड 600 Fahrenheit। आपको प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है। इट्स एक्सपेंशन इज बीइंग डन आइसोथर्मली। टेम्परेचर कांस्टेंट करके 75 psi तक आप लेके जा रहे हो बी स्टेट तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ए और बी आपको डिफाइन हो गया। देन इट इज कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू 60 psi। इसके बाद आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है और इसको 60 psi तक आपने इसको कूलिंग करनी है इसकी। तो इसका यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज होगा, कूलिंग हो रही है। एंड देन फाइनली इट इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इसके बाद आप इसको कंप्रेस करके वापस इसकी ओरिजिनल स्टेट पे लेके जाएंगे। एक्सक्यूज मी क्लास। एक मिनट। ओके क्लास। ओके, सो आपके पास यहाँ पर 3 स्टेप्स बनेंगे। फाइनल स्टेप में एडियाबेटिक है। फॉर ईच ऑफ दीज स्टेप्स आप इसको एक ट्राइंगल शेप में लेके जा सकते हैं। You draw all 3 processes as we have already drawn in another problem in the class. So for each of 3 steps of the process, you need to find out change in internal energy, change in enthalpy. And for each of these 3 steps, where possible, you need to calculate work and heat, also heat transfer as well. So here आपने स्टीम टेबल, यू नीड टू यूज योर स्टीम टेबल्स। आपको सारी इक्वेशंस भी इनकी पता है। आपने स्टीम टेबल से इनकी वैल्यूज देखनी है। जहाँ पे पॉसिबल होगा आपने डायरेक्टली, आमतौर पे जो इन स्टीम टेबल में इंथैल्पी की वैल्यूज आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी। जो डेल्टा यू निकालना होगा उसके लिए आपको फिर डेल्टा पी वी वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको पता है कि इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी। ठीक है, तो आपने इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। एज यू नो द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट ऑल दीज स्टेट्स। सो तीनों स्टेट्स के ऊपर आपने वॉल्यूम देखना है फ्रॉम स्टीम टेबल। आपको इंथैल्पी की जितनी वैल्यू मिल सकती है वो आप नोट करोगे फ्रॉम स्टीम टेबल। जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पर आप इक्वेशन यूज़ करोगे और आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिस आप लेंगे 1 पाउंड स्टीम के, आप बेसिस ले सकते हैं सिंस दिस इज ए क्लोज सिस्टम। तो आपके पास यहाँ पर आप जनरल एनर्जी बैलेंस लगाएं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो करें और आगे आप वैल्यूज इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करें। ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल होगा आप करें इसको सॉल्व, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू निकालें, और जहाँ पे नहीं निकल सकती होगी वहाँ पर आप बता दें कि मतलब इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम हियर और डाटा इज इनसफिशिएंट टू कैलकुलेट द वैल्यू। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, नेक्स्ट हम देखेंगे that is another example, another problem from your book. This is about water is being pumped from the bottom of a well which is 15 feet deep at the rate of 200 gallons per hour into a vented storage tank to maintain a level of water in a tank 165 feet above the ground. अब ground level से 15 फुट 15 फुट डीप एक वेल है, वहाँ से पानी को निकाला जा रहा है, पंप किया जा रहा है, और रेट ऑफ विड्रॉल जो वो आपको गिवन है पंपिंग का 200 गैलन्स पर आवर दिया हुआ है, और एक 165 फीट अबव एक आपके पास टैंक है, वहाँ पर आपने इसको वाटर लेके जाना है। तो टोटल हाइट में जो चेंज आ रहा है दैट इज 15 प्लस 165 180 फीट जो है हाइट में चेंज आ रहा है, और आपने वाटर को मूव करवाना है, पंप करवाना है। Now to prevent freezing in the winter, a small heater puts 30,000 BTU per hour into the water during its transfer from the well to the storage tank. To avoid freezing in the winter season, a small heater is inserted there which puts about 30,000 BTU per hour into the water, and then heat is lost from the whole system at the constant rate of 25,000 BTU per hour. So total 30,000 is being put into the system,
and 25,000 is lost to the surrounding. Only 5,000 is retained within the water. So what is the temperature of water as it enters the storage tank? जब टॉप के ऊपर वो आप लेके जा रहे हो, वाटर एंटर हो रहा है, व्हाट इज इट्स टेम्परेचर, अज्यूमिंग दैट वेल वाटर इज एट 35 डिग्री फ़ारेनहाइट. जब ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं आप, that is at 35 degree Fahrenheit. You need to find out the final temperature of water when it enters the storage tank. Okay, pump की जो specification है वो ये है, a 2 horsepower pump is being used to pump this water and its efficiency is 55%. About 55% of the rated horsepower goes into the work of pumping and the rest is dissipated as heat to the atmosphere. आपको पंप के बारे में भी बता दिया गया है. So, सबसे पहले आपने इसकी फ्लो डायग्राम या इसकी जो डायग्राम है वो ड्रॉ करनी है. आपने देखना है कि वाटर जो अंडरग्राउंड से 15 फीट डीप वेल है वहाँ से पानी आ रहा है एंड देन इट गोज एट 165 फीट अबव द ग्राउंड. सो टोटल हाइट में जो चेंज आ रहा है दैट इज़ 180 फीट आपके पास आ रहा है. स्मॉल हीटर आप बनाएंगे विच जिसकी 30,000 BTU वो पावर दे रहा है, हीट दे रहा है इसके अंदर, एनर्जी दे रहा है, और उसमें से 25,000 इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो बाकी जो 5,000 है वही सिस्टम के अंदर जाएगा. सो आपने इसको देखना है. ठीक है, इसमें आप जो अच्छा व्हेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी एनर्जी बैलेंस प्रॉब्लम देयर आर सर्टेन स्टेप्स यू नीड टू फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल you need to identify what type of system is it. Since this is an open system, here we are given with open system, then you need to determine whether it is an unsteady or steady state system. So what do you suggest, is it a steady or unsteady state system? Okay class, if there is no water being retained at any point, आप वेल से वाटर ले रहे हैं एंड देन यू आर सप्लाइंग इट टू द स्टोरेज टैंक, तो वहाँ पर आपके पास यूजुअली एक्यूमुलेशन की टर्म यहाँ पे जीरो हो जाती है. ठीक है, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द स्टोरेज टैंक देन accumulation term exists there, but if you are focusing on the pump and this system then there is no accumulation term. So here आपने जनरल एनर्जी बैलेंस लगाना है. आपके पास जो टर्म होगी Q plus W is equal to delta H plus kinetic energy plus potential energy. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके पास टोटल कितना इसमें फाइनल वाटर का टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन हम उसको अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको सॉल्व कर लेंगे साथ में. ठीक है, बल्कि वहाँ पे प्रैक्टिस भी इसकी हो जाएगी. फर्दर कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे वो भी मैं इसमें से फ्रॉम योर एक्सरसाइज में इसको चूज़ जो भी अंदर से सेलेक्ट करके वो मैं अपलोड कर दूँगी. प्लस द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड. वो आप देख लीजिएगा फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ ह्यूमन लॉ, तो फिर हम आगे इसको देख लेंगे साथ में. ठीक है, अच्छा क्लास, अब इसके अंदर आप लोगों के पास अब जिन बच्चों ने स्टूडेंट्स एक्चुअली कुछ चाह रहे थे कि उन्होंने जुमा के लिए जाना है, इसलिए मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं करवाई, मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं आप लोगों के साथ. ठीक है, अगर गर्ल्स अभी आप लोग उसको प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आप प्रैक्टिस करें इसको साथ में. ठीक है, अटेंडेंस में आप लोगों की भी मार्क कर लेती हूँ. ठीक है, अभी आप लोग अभी ऑनलाइन ही रहिएगा इसमें, ताकि मैं यहीं से आप लोगों के रोल नंबर्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ से नोट कर लेती हूँ इसको. ठीक है, मैम स्लाइड्स अपलोड कर दें. क्या कर दूँ? स्लाइड्स अपलोड कर दे टीम्स पे. जी जी मैं कर दूंगी. मैं उसमें मैंने आपको बताया अभी कि मैं जैसे ही कुछ मैंने मज़ीद प्रॉब्लम जो आपको असाइन करने हैं, तो मैं जिस तरह से जैसी वो प्रॉब्लम चूज़ कर लेती हूँ, मैंने भी सिलेक्ट नहीं किया है उसमें से ना, तो वो जैसे ही वो करती हूँ तो फिर मैं आपको उसमें कर दूंगी. ठीक है, अपलोड कर दूंगी. पिछले सारे हो गए आपके? मैम लास्ट जो आपने प्रॉब्लम्स दिए थे उनमें से 2 से 3 प्रॉब्लम्स में इशू है, वो नहीं सॉल्व हुए. तो वो आप मुझसे अगले लेक्चर में मंडे को इंशाल्लाह ताला मैं कैंपस में ही होंगी, तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. आप पहले से ऐसा कीजिएगा ना अपनी जो भी आपकी GR हैं या इस तरह से आप, बल्कि आप क्लास में मुझे अपना जहाँ पे आपने सॉल्व किया होगा आप उसी पे आए, वहीं पे हम देख लेंगे
किस चीज़ में क्यों मसला आ रहा है, फिर जी मैम। क्यों नहीं प्रॉब्लम्स आपसे आपके हाथ आ रहे? एक और बात पूछ रही है कि जो आप प्रॉब्लम्स हमें बता रही हैं स्लाइड्स में, हमने चैप्टर में से वही करने हैं और वही वाली एग्जांपल्स करनी है? जी जी, अभी वही वाले करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ना ये, दे आर योर प्रैक्टिस मैम प्रॉब्लम। जी मैम, ये जो स्टीम टेबल के ये जो यूजेस है सैचुरेशन और वो वाले आप मंडे वाले दिन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्लास में। कौन से यूजेस है? मैम डिफरेंट फेजेस और ये कैसे सही तरह यूज करते हैं। अभी भी बताने की जरूरत है? कितनी दफा तो कर लिया है। बस कुछ लोग हैं उनको चाहिए एक्सप्लेनेशन। ये कौन से लोग हैं जिनको चाहिए? वो जरा पहले मुझे मंडे को अपनी शक्लें दिखाएंगे ना, जरा मैं देखूं कौन से ऐसे क्या कहते हैं शाहकार हैं आपकी क्लास के, या मेहमान अदाकार हैं कोई जिनको नहीं अभी भी यूज आता। मैम जी मैम 55 रोल नंबर प्रेजेंट है। वो मेरा नेट नहीं चल रहा था तो हम हॉस्टलाइट हैं, तो मैंने 69 रोल नंबर से हम एक ही साथ बैठ के क्लास ले रहे हैं। अच्छा, एक मिनट हो रहा। मैम हम 3 स्टूडेंट्स जो हैं 42, 32 और 58 ये तीनों एक साथ बैठ के क्लास ले रहे हैं। हैवी वेट लिफ्टर। अच्छा, अभी एक फीमेल स्टूडेंट, अभी बेटे आपने क्या रोल नंबर बताया था? 53? मैम 55। अच्छा 55। अच्छा क्लास, आप लोगों को कल आप लोगों को पता लग गया आप लोगों का क्विज है नेक्स्ट फ्राइडे को? मैम साइमा ने शायद बताया होगा, या बल्कि सेक्शन ए वालों को तो नहीं पता होगा। आप लोगों का नेक्स्ट फ्राइडे को क्विज है, ठीक है? मैम 3 स्टूडेंट्स साथ बैठकर क्लास ले रहे हैं 42, आपने 32 और 58। 42, 58 और 32। चलें ठीक है क्लास, फिर जाएं शाबाश जाके। एक्सक्यूज मैम, जी जी मैम मैं चैट में लिखा नहीं जा रहा तो मेरा वो रोल नंबर मार्क कर दीजिए 59। 59 का मैंने कर दिया। 59 मैम। 59 is 26 जी मैम। 69 is also there. ओहो, अब तो मैम 84 का भी कर लीजिए, 84 का। एक्सक्यूज मी मैम, 84 रोल नंबर 26 एक साथ क्लास ले रहे हैं। अटेंडेंस का बता रहा हूँ 84। इतनी तो आप लोगों की स्ट्रेंथ नहीं है जितनी अटेंडेंस मेरे पास आ गई है। मैम 37 मैम 37 and 1 present। चलें ठीक है, ठीक है क्लास, बाकी जिनके वो मैसेजेस हैं वो मैं उसमें से देख लूँगी, ठीक है? चलें आप लोग अब जाके जुमा पढ़ें, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला स्लाइड्स में आज या कल तक अपलोड कर दूँगी, ठीक है? ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। मस्जिद। अल्लाह हाफिज़।